Okay, so in this video, we are going to talk about the family planning and contraception, and so many questions will be coming from this topic. देखो यहाँ पे अब जो first question यहाँ पे है, the doctor explaining to the community that after vaccination it won't lead to impotency. What type of barrier is this? So let's see. एक यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है इन्वायरमेंटल बैरियर, फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर एंड कल्चरल बैरियर. देयर आर 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर. सो लेट मी डील विथ इट वन बाय वन. सो फर्स्ट जो है वो है इन्वायरमेंटल बैरियर. सो इन्वायरमेंटल बैरियर में जनरली क्या क्या हमको समझना है. सो इन इन्वायरमेंटल बैरियर इज द फिजिकल और स्ट्रक्चरल फैक्टर्स दैट इम्पीड एक्सेस और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ generally the health intervention. So this is nothing but environmental barrier, physical or structural factors that impede access or implementation of health interventions. Next देखो क्या है psychological barrier. So psychological barrier is क्या है, related to individual thoughts, emotions or attitudes that may hinder acceptance or understanding of health informations. Like certain communities, they don't accept the use of contraceptive devices, that will come under generally psychological barrier. Next देखो cultural barrier is generally based on belief, values and norms within a specific culture or a community that can influence perceptions and acceptance of certain practices including vaccination. So rather than telling, जो मैंने इससे पहले वाला जो आपको मैंने बताया था जनरली एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल इस कंडीशन में एकदम फिट होगा. सो दिस इज जनरली कल्चरल बैरियर रादर देन साइकोलॉजिकल बैरियर. उसको हम क्या बोल सकते हैं, कल्चरल बैरियर. लाइक वैक्सीनेशंस लेने से क्या हो जाता है कि धर्म में प्रॉब्लम आता है, एवरीथिंग लाइक दैट, दोज थिंग्स विल बी कंसिडर्ड अंडर कल्चरल बैरियर. Next is physical barrier. So physical barrier is tangible barriers that restrict the accessibility of health care services or intervention. So those are the physical barriers. So यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया, doctor explaining to the community that after vaccination it won't lead to impotency. Certain people, due to certain cultural belief, they believe that if they do the vaccination, if they take any vaccination, that will lead to impotency in them. So this is nothing but a cultural barrier. So our answer will be cultural barrier for this. Next देखो, after vasectomy for how many weeks a person should use barrier method? Very important question. This is for both your obs and gyne and for this PSM also. So let's see, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आफ्टर वैसेक्टोमी हाउ मेनी वीक्स अ पर्सन शुड यूज बैरियर मेथड. सो लेट अस टॉक एवरीथिंग दैट हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम द वैसेक्टोमी टॉपिक. सो लेट्स सी, वैसेक्टोमी इज अ सेफर एंड सिंपल प्रोसीजर. इट इज वेरी सेफर एंड वेरी सिंपल प्रोसीजर. मिनिमम लेंथ ऑफ वास कट ऑफ फॉर इफेक्टिव स्टेरिलाइजेशन इज greater than or equal to 1 centimeter. Advice is use another contraceptive for 3 months or 30 ejaculations. So this is from where the question is being asked. So let's see, if you have done the vasectomy, you are not completely free from today. Actually what happens, you have to use another contraceptive for at least 3 months, or you have to do 30 ejaculations, because some of the sperms that is still there in your tract, that can cause pregnancy. And if you do not take any contraceptive, obviously there will be pregnancy will be, obviously there will be pregnancy. So you have to use at least another contraceptive for 3 months, or you have to do 30 ejaculations, then only safe period is advised. Next देखो, preferred method for vasectomy. Preferred method for vasectomy is non-scalpel vasectomy, that is no stitches are required and day care procedure. So it is very much preferred for vasectomy. Next देखो, most common cause of failure of vasectomy in India is misidentification of vasa difference by surgeon during the procedure. So this is all you need to know about the vasectomy. So at least 12 to 20 weeks, that is 3 months. 3 months यानी कि 12 weeks, 3 for that 12 weeks. So 12 to 20 weeks, you should prefer some other barrier methods or other methods. And the next that you can do is that is 30 ejaculations. 30 ejaculations भी अगर हो गया हो, after 30 ejaculations it is considered safer that no sperm is still in the tract. ठीक है, no sperm is there in the tract. Next देखो, what is the content present in given contraceptive image? So if you see this contraceptive image, this is nothing but today करके दिया हुआ women's contraceptive. This picture was not clear, so I have used another picture here. You can see this picture, today women's contraceptive गर्भ निरोधक, प्यार के no side effects. This type of advertisement lines, I don't know why they keep. This generally contains non ऑक्सीनोल 9. सो देखो यहाँ पे ये अगर पिक्चर क्लियर रहेगा तो जनरली यहीं से हम कर लेंगे. सो लुक, नॉन ऑक्सीनोल 9 इज हियर. सो आंसर नॉन ऑक्सीनोल 9 हो जाएगा. देखो, लेट अस
do a little bit about this product. This is nothing but a vaginal sponge, ठीक है. So vaginal sponge is V band like structure. Brand name is Today, जो यहाँ पे आपने अभी देखा, this is Today है ना, ये Today करके लिखा हुआ है, this is Today brand name. केमिकल इसमें कौन सा होता है, नॉन ऑक्सीनोल 9, which is a spermicide, and it's generally इसका मैकेनिज्म क्या होता है, it will rupture the acrosome, ठीक है, it will rupture the acrosome. It is a barrier method. Technique of insertion is a little bit hectic here. So see, must be wet under water till thoroughly wet before insertion. Inserted into vagina and then pushed gently to be placed over the cervix. Requires skill to use. Side effect may lead to toxic shock syndrome if left for greater than 24 hours. If you just inserted it and left it for greater than 24 hours, it can lead to toxic shock syndrome. Inserted prior to intercourse and left 6 hours post ejaculation. Higher failure than diaphragm. Not recommended under the National Family Welfare Program. So this is all about vaginal sponge that you need to know. आगे चलो. After 6 weeks delivery, a P1 L1 female desires contraception for at least 3 years. Make a point of time. क्या है यहाँ पे जनरली, desires contraception for 3 years. Which one is the best option? देखो, POP. This is used as generally emergency pills less than 72 hours. OCP is interceptive method, that is after intercourse you can use, and condom is generally at the time of intercourse. It is a conventional contraceptive. But if the time is mentioned here, so that is 3 years, so generally you will go with copper T, क्योंकि ये 5 years से 10 year के लिए it is best for generally 5 to 10 years gap, that is copper T. आगे देखो, ऑल आर ट्रू अबाउट वैसेक्टॉमी एनएसबी एक्सेप्ट, ठीक है. देखो, वैसेक्टॉमी के रिकैनलाइजेशन पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, ठीक है. यूज कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर 3 months ऑफ कोर्स, और 30 इजैकुलेशन है ना. नेक्स्ट क्या है, परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ऑफ कोर्स इट इज अ परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. स्टरलिटी सून आफ्टर वैसेक्टॉमी, नो. एटलीस्ट 30 इजैकुलेशन और जनरली 3 months is required, ठीक है. सून आफ्टर द प्रोसीजर यू कांट बी जनरली फुली स्टेरिलाइज्ड. नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रासेप्टिव शोन इन द फोटोग्राफ गिवन. इस फोटोग्राफ में क्या दिख रहा है, सही दिख रहा है आपको कि दिस इज टी, सो दिस इज नथिंग बट कॉपर टी. सो कॉपर टी तो हो गया, लेकिन अब देखो कॉपर टी 7, CuT20B, CuT220B, नोवा टी, CuT330A. अब इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो गया. देखो कैसे आप करोगे, कॉपर टी तो सबको पता है. सो जनरली दिस इज CuT380A. कैसे, देखो, कॉपर ऑन बोथ द स्टीम्स, 10 ईयर्स सेल्फ लाइफ होता है इसका. बोथ द स्टीम्स पे जनरली क्या है, कॉपर से. सो दिस इज जनरली कॉपर टी 380A. 380 मीन्स 380 mm² कॉपर वायर ऑन द डिवाइस. अब देखो CU 380AG की अगर मैं बात करूं, सो CU ओनली ऑन वर्टिकल स्टीम, उस पर सिर्फ वर्टिकल स्टीम पे कॉपर होगा. एंड AG जनरली इंक्रीजेज द सेल्फ लाइफ टू कॉपर, 5 ईयर्स ऑफ सेल्फ लाइफ इसकी भी होगी. सो दिस इज जनरली, इसका कितना होगा, 10 ईयर्स ऑफ सेल्फ लाइफ, कॉपर टी 380A. सो यू हैव टू distinguish this by seeing whether there is copper only on the vertical stream or copper on the both horizontal and vertical stream both. यहाँ पे देखो, ये horizontal पे भी 2 है और ये vertical पे भी 1 है. So this is generally the technique of identification here. A male underwent vasectomy and after 3 months his wife got pregnant. What advice would have been given to him? वही चीजें पूछ रहा है post vasectomy. Usage of barrier methods for 3 months after the procedure or generally 30 ejaculations. Don't have sex until you have 30 ejaculation. It does not mean that you are going to do 30 ejaculations in a day only. This is not a good advice. A woman who is lactating came to OPD 6 weeks after delivery for checkup and to get advice for the contraception. Lactation में है. Which of the following is not advised? Okay, so यहाँ पे देखो क्या क्या दिया हुआ है, combined OCP, Norplant, Minipill and IUCD. इसमें से कौन सा नहीं जनरली क्या है, which is not advised. So this is nothing but combined OCP. How? Let's see how COCP is generally not advised in this case. So if we talk about the contraindications of combined oral contraceptive pills, you must know the relative contraindication and absolute contraindication. So generally here the relative contraindications are age greater than 40 years, smoking, and age greater than 35 years. Generally relative contraindication is age greater than 40 years. But if the woman is having generally smoking habits, then it is age now comes down to 35 years. ठीक है. Mild hypertension, CKD, epilepsy, migraine, nursing mother in first 6 months. देखो वही है हमारे क्वेश्चन में, ठीक है. दिस इज रिलेटिव contraindication. Nursing mother in first 6 months cannot use COCP. Diabetes mellitus, gallbladder disease, history of infrequent bleeding and amenorrhea, etc.
एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन की मैं बात करूं, सी ए ब्रेस्ट एंजाइटल्स, लिवर डिजीज, प्रीवियस और प्रेजेंट हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, कार्डियक एबनॉर्मलिटीज, कॉन्जेनाइटल हाइपरलिपिडेमिया, अनडायग्नोज्ड एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग। सो दीज आर जनरली द एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। सो हमारे से क्या पूछा गया, 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी में आ रहे हैं, सो इनसाइड 6 मंथ है ये, दैट इज दिस इज रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ कंबाइंड ओसीपी। दिस थ्री कैन बी यूज्ड है। आगे देखो A 22 years old low socioeconomic female worker present within 8 hours of sexual assault on 13th day of the cycle and asked for emergency contraception. So on the 13th day she has a sexual assault. So for that what will be your advice? देखो इसमें जनरली इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए, सो द बेस्ट इज लिवोनर्जेस्ट्रॉल 1.5 मिलीग्राम। ठीक है, लिवोनर्जेस्ट्रॉल 1.5 मिलीग्राम इज द बेस्ट रिक्वायर्ड है। स्पर्मिसाइडल क्रीम व्हिच इज यूज्ड इन कॉन्ट्रासेप्टिव्स, स्पर्मिसाइडल क्रीम व्हिच इज यूज्ड इन कॉन्ट्रासेप्टिव जस्ट हमने पढ़ा था 2 डे में, दैट वाज नॉन ऑक्सिनोल 9। ठीक है, दिस इज द स्पर्मिसाइडल क्रीम यूज्ड इन vaginal sponge। आगे देखो टारगेट कपल मीन्स सिंपली कपल दैट इज एलिजिबल फॉर प्रैक्टिसिंग फैमिली प्लानिंग, दिस इज टारगेट कपल। हाईएस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर इज सीन विद दिस स्पर्मिसाइडल, दैट इज ये टुडे वाला जो था ना, दैट इज पर्ल इंडेक्स फॉर मेजरमेंट ऑफ जनरली कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर। ये आपको याद रखना है, पर्ल इंडेक्स, सुलिवन इंडेक्स, ये सब क्या है, ये सब आपको याद रखना है। आगे देखो यू अनमेट नीड फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव मीन्स, ओके अनमेट नीड फॉर, ओके so unmet need for contraceptive means generally family planning in those who are not using any contraception, family planning in those who are not using any contraception। आगे देखो 100 females use contraceptive for 1 year, there is one failure HWI। ठीक है, one failure है। how much is the accidental pregnancy rate? accidental pregnancy rate इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, देखो फेलियर रेट पर HWI is generally calculated by total accidental pregnancy by total month of exposure into 1200। सो यहाँ पे देखो 1 ईयर है ना, 1 ईयर है तो फेलियर रेट कितना हो गया 1 है ना, इज इक्वल्स टू टोटल एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी कितना हुआ वो हमको पता नहीं, वही निकालना है। सो x बाई 12 इंटू 1200, सो दैट इज 1 इज इक्वल्स टू 1200 x बाई 12, और इसको अगर करोगे तो 0.01 x आएगा। सो जनरली 0.01 इज आवर आंसर। बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर अ लैक्टेटिंग फीमेल, ऊपर वाला केस भी था, लैक्टेटिंग फीमेल के केस में द बेस्ट इज प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल, पीओपी इज द बेस्ट। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सीओसीपी नहीं यूज कर सकते क्योंकि जनरली इट इज द रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन इन द ब्रेस्ट फीडिंग इन द फर्स्ट 6 months। आगे देखो बेस्ट टाइम टू स्क्रीन इन ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, बेस्ट टाइम टू स्क्रीन इन ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट फॉर सर्टेन कैंसर्स और मेलिग्नेंसी इधर उधर के लिए जो हम करना है, दैट इज जस्ट आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन, बिकॉज उस टाइम पे क्या होता है, जस्ट आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन इज द बेस्ट टाइम टू, और आप उस टाइम पे अगर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करो तो यू विल बी इट विल बी इजी फॉर यू टू जनरली क्या बोलते हैं उसको, जनरली इट इज वेरी इजी टू फाइंड इफ देयर इज सम लंप और एनीथिंग प्रेजेंट देयर। आगे देखो ट्रू अबाउट पर्ल इंडेक्स, पर्ल इंडेक्स क्या है, इट इज फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, ऊपर ही हमने किया अभी। फेलियर रेट ऑफ पोमेरोइज टेक्निक ऑफ स्टेरिलाइजेशन, पोमेरोइज टेक्निक ऑफ स्टेरिलाइजेशन में फेलियर रेट इज 0.1, दैट इज 0.1 to 0.3% वहाँ पे दिखाया होगा। सो जनरली यहाँ पे हमको क्या मिलता है, उससे सबसे नजदीक वाला वैल्यू है 0.1%। सो दिस इज आवर आंसर इन केस ऑफ 292 नंबर, दैट इज द फेलियर रेट ऑफ Pomeroy's technique of sterilization। We will talk about this Pomeroy's technique of sterilization and many more other techniques of sterilization in the obs and gyne part। ठीक है, वो हम करेंगे। चलो, सो दिस मच फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बात करेंगे, डेमोग्राफी एंड हेल्थ के बारे में बात करेंगे। विल टॉक अबाउट डेमोग्राफी एंड हेल्थ इन द नेक्स्ट वीडियो।